کے پی ایم ایل این فرنٹ رنر ہیں، اور ہم دھاندلی کا الزام، جو جیتے ہوئے وہ دھاندلی کا الزام ہارے ہوئے پہ لگا رہے ہیں۔ مطلب کوئی شرم آنی چاہیے۔ تماشا بنا کے رکھ دیا ملک کو، ہر چیز کو تماشا بنا لیتے ہیں۔ سائفر کا کاغذ آج ہاتھ میں آ جائے تو غیر ملکی سازش قرار دے دیتے ہیں۔ اور اب آپ کو عطا بتائے گا، وہ ایکسپلین کرے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی، کیونکہ ابھی پلندہ کھلنے لگا ہے، وہاں جھوٹوں کی پٹاری کھلنے والی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے آگے۔ بھئی انٹرنیشنل میڈیا نہ ہو گیا کوئی خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور عطا آپ کو بتائے گا کہ فارم 45 کی اصلیت کیا ہے، انہوں نے کیسے اس کو اپنے بیانیے کے لیے جھوٹی طور پر استعمال کیا، کس طرح میڈیا کو استعمال کیا انہوں نے، میڈیا میں بیٹھے چند عناصر کو استعمال کر کے انہوں نے جھوٹا بیانیہ بنایا، اور ہمیں یہ کہا گیا آپ بولے کیوں نہیں۔ ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں، سب سے زیادہ نقصان انہوں نے ہمیں پہنچانے کی کوشش کی۔ آج ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس وہ کوئی پٹاری نہیں ہے بندروں والی کہ جب چاہے وہ پٹاری چلنی شروع ہو جائے۔ ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں، ہمارے پاس تمام اس وقت اٹیسٹڈ چیزیں موجود ہیں جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں، اور یہی وہ فورم ہے۔ اور اب آپ کو اصلیت فارم 45 کی عطا تارر صاحب بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میں بڑا مشکور ہوں۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں اربوں روپیہ کمایا تھا، ایک سیل قائم کیا گیا، اور یہ جو سیل قائم کیا گیا تقریباً 100 ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا گیا۔ یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، میں اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم اس لیے کہتا ہوں کیونکہ باقاعدہ بیرونی طاقتوں کی مدد سے اور منصوبہ بندی کے تحت ریزلٹس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جعلی فارم 45 سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے، اور میڈیا کو اس رات غلط رزلٹ فیڈ کیے گئے۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پریزائڈنگ آفیسر جب وہ گنتی مکمل کرتا ہے اور وہ فارم 45 لکھنا شروع کرتا ہے تو وہاں پہ موجود پولنگ ایجنٹس دوبارہ گنتی کا تقاضا کرتے ہیں، اور نہ صرف دوبارہ گنتی کا تقاضا کرتے ہیں بلکہ کسی ووٹ پہ ڈبل سٹیمپ ہو، کوئی شک ہو تو اس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور موقع پہ ٹائم لگتا ہے فارم 45 بنتے ہوئے۔ اور اس کے بعد پورا ایک مرحلہ ہے کہ جب آپ پریزائڈنگ افسر نے ریٹرننگ افسر کے دفتر جانا ہوتا ہے تو باقاعدہ اس کو سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، گاڑی فراہم کی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ گاڑی میں بیٹھ کے ریٹرننگ افسر کے دفتر جاتا ہے اور فارم 45 جمع کراتا ہے۔ یہاں پہ ہوا یہ کچھ فارم 45 میرے ہاتھ ہے جو میرے مخالفوں نے آرو آفس جمع کرائے تھے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ کو انگوٹھا صرف سیاہی نظر آ رہی ہے، انگوٹھا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اس پہ انگوٹھا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو اجلت میں فارم 45 پی ٹی آئی نے تیار کیے اور سینکڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر چڑھائے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ میڈیا کے اوپر الٹ رزلٹ آنا شروع ہو گئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گوہر خان صاحب کا رزلٹ ہے کہ پہلے اے این پی کے امیدوار عبدالرؤف صاحب 27,000 ووٹ لے رہے ہیں اور گوہر خان صاحب کے 10,000 ووٹ ہیں، اور اس کے فوراً بعد دونوں برابری پہ آ جاتے ہیں، دونوں 27,000 پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ فرق کیسے کم ہوا؟ محض 5-10% ابتدائی ریزلٹس بغیر فارم 45 کی تصدیق کے جو میڈیا پہ چڑھائے گئے، سوشل میڈیا پہ چڑھائے گئے، اور کچھ ایسے فارم 45 سے جن کا وجود نہیں تھا، تو یہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن کے 2 فارم 45 کیسے جاری ہو گئے؟ مجھے ذرا جواب دے دے کوئی۔ ایک ہی پولنگ اسٹیشن ہے اور فارم 45 2 جاری ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جو پی ٹی آئی نے کیا۔ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے ہم نے ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن کی طرف جانا ہے، ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے۔ یعنی کے پی کے اندر آپ سیٹیں جیتتے ہیں، وہاں پہ آپ شاباشیں لے رہے ہیں، وہاں پہ آپ جشن منا رہے ہیں، اور آپ پنجاب میں سیٹیں ہارتے ہیں تو وہاں پہ آپ دھاندلی کا رونا روتے ہیں۔ دھاندلی ہونی ہوتی تو کیا رانا ثناء اللہ ہارتے، سعد رفیق ہارتے، خرم دستگیر ہارتے، جاوید لطیف ہارتے؟ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو کیا ان کو جتا نہ لیا جاتا؟ یعنی پنجاب خیبر پختونخوا میں یہ فرق ہے کہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ جیتے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، اور پنجاب میں آپ ہارے ہیں تو پنجاب میں دھاندلی ہو گئی ہے، سندھ میں آپ ہارے ہیں، سندھ میں دھاندلی ہو گئی ہے، بلوچستان میں آپ ہارے ہیں، بلوچستان میں دھاندلی ہو گئی ہے۔ یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہے، اور یہ جو بیرونی طاقتوں کو آپ آواز دے رہے ہیں کہ امریکہ میری مدد کرے آ کے، تو بھائی آپ تو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں۔ ہاں آپ غلام تھے، آپ غلام ہیں،
جو فارم 45 کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا صرف اور صرف یہ دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے کہ ہم جمہوریت کو اس ملک میں ڈیریل کر دیں. اب یہ اصلی فارم 45 آپ دیکھ لیں, اس کے اوپر آپ کو پراپر انگوٹھا بھی نظر آئے گا, پراپر سائن بھی نظر آئے گا, ووٹوں کی تعداد بھی نظر آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ جس طریقے سے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے. اب یہ جو فارم 45 میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ جو اصلی فارم 45 ہے یہ ایک پولنگ اسٹیشن کا ہے. میرے 185 ووٹ ہیں, بلاول صاحب کے 43 ہیں, اور میرے مخالف کے 206 ووٹ ہیں. یہ اصلی ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اب آپ نے جو سینکڑوں کی تعداد میں جعلی فارم 45 میڈیا پہ اپلوڈ کیے, اور دیکھیے میں معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے پاس معلومات ایسی بھی ہیں کہ تمام پولنگ سٹیشنز پہ میڈیا ہاؤسز کے لوگ موجود نہیں تھے, ہو نہیں سکتے. میرے حلقے میں 337 پولنگ سٹیشنز ہیں. اب مجھے آپ بتائیے 24 ٹی وی چینلز ہیں, کیا یہ ممکن تھا کہ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر آپ کا ایک رپورٹر یا آپ کا چینل کا عملہ موجود ہوتا؟ آپ نے تو واٹس ایپ کے اوپر ہی ریزلٹ موصول کرنے تھے. آپ کو تو تبھی ریزلٹ ملنا تھا جب میں نے بھیجنا تھا یا میرے مخالف امیدوار نے بھیجنا تھا. وہ سب سے پہلے ریزلٹ دینے کی بازی میں سبقت لینے کے لیے امیدوار پہ ٹرسٹ کیا گیا. میں اس پہ میڈیا ہاؤس کی غلطی نہیں کہتا, میں نے بھی ریزلٹ بھیجے اپنے, مگر میں نے تب بھیجے جب میرے فارم 45 تصدیق شدہ آنا شروع ہوئے. مجھے بڑی کالز آئی, ریزلٹ دیں رزلٹ دیں رزلٹ دیں. میں نے کہا میں بڑے بائی الیکشن لڑے ہیں, میری خاندان کے افراد بہت سارے الیکشن لڑتے ہیں, میرا بڑا تجربہ ہے. میں سلمان اکرم راجہ کی طرح پہلی دفعہ اس فیلڈ میں نہیں آ رہا کہ مجھے جو گلی سے ایک فارم 45 کو بھیج دے تو میں اس پہ وکٹری کلیم کرنا شروع کر دوں. میں یہ کام نہیں کروں گا. میرا پولنگ ایجنٹ جس نے پورا دن صبح سے لے کے رات تک ڈیوٹی دی ہے, پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود رہا ہے, مجھے جب وہ فارم 45 بھیجے گا تصدیق شدہ جس پہ سائن بھی ہوں گے, جس پہ انگوٹھا بھی ہوگا, میں وہ فارم 45 کی بنیاد پہ اپنا ریزلٹ کمپائل کروں گا, اور میں وہی فارم 45 میڈیا کو بھی دوں گا. میں نے آپ کے بیٹ رپورٹر سامنے بیٹھے ہیں, میں نے گروپ کے اندر فارم 45 شیئر کیے جب وہ میرے پاس آ گئے. اور دیکھیں فارم 45 وہ ہے جو پریزائڈنگ افسر لے کے جاتا ہے ریٹرننگ افسر کے پاس, اور پھر ریٹرننگ افسر اس کو ای سی پی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتا ہے. اب اگر آپ متضاد قسم کے فارم 45 بنا رہے ہیں اور جھوٹے فارم 45 بنا رہے ہیں کیونکہ آپ ہار چکے تھے اور آپ کے پولنگ ایجنٹس نے بھی اس کو مینیپولیٹ کیا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا, اور جعلی فارم 45 کی بنیاد پہ آپ نے اپنی فتح کا جو ہے وہ جشن منانا شروع کر دیا, تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے. یہ آپ نے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی, آپ نے اس الیکشن کو متنازع بنا کے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے یہ انتظار نہ کیا کہ جو پریزائڈنگ افسر ہے وہ 3 بار 4 بار گنتی کے بعد جب فارم 45 بنا کے اپنے بیگ بند کر کے گاڑی میں بیٹھ کے ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ رہا ہے تو اس کا انتظار کر لیا جائے. آپ کو چاہیے تھا کہ جب پریزائڈنگ افسر فارم 45 جمع کرا رہا تھا آپ وہاں پہ کہتے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, میرے پاس دوسرا فارم 45 ہے. مگر بدقسمتی سے آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے. آپ نے جعلی فارم 45 سوشل میڈیا پہ چڑھایا, میڈیا کو دیا, اور جب پریزائڈنگ افسر کا اصلی فارم 45 ریٹرننگ افسر کے پاس آیا تو آپ غائب تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ غلط ہے کہ اس کو اپلوڈ مت کرو, اس کو ای سی پی کی ویب سائٹ پہ مت چڑھاؤ, کیونکہ آپ کے پاس دستخط نہیں تھے, آپ کے پاس انگوٹھے نہیں لگے ہوئے تھے. آپ نے جعلی فارم 45 جو ڈیجیٹل ٹیررزم آپ نے کیا ہے, آپ کو تو انتظار کرنا چاہیے تھا. میرا جو پہلے 5 ریزلٹ آئے ہیں وہ 10:30 11 بجے آئے ہیں. میں نے ویٹ کیا, میں ریٹرننگ افسر کے دفتر بھی گیا, مگر میں نے جلد بازی اجلت سے کام نہیں لیا. میں چاہتا تو میں بھی ان کی طرح اپنا ریزلٹ آپ کو فیڈ کر سکتا تھا, میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے فارم 45 کا انتظار کیا کہ تصدیق شدہ آئے گا, میں اس کے بعد میڈیا کو بتاؤں گا کہ میرا ریزلٹ یہ آنا شروع ہو گیا ہے. اور پھر 11:30 کے بعد تواتر سے آتے گئے. اب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب یہ ایک ہی حلقہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا, جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امیدوار ہیں اور 2 ریزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے, متضاد ریزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیدوار ایک ہی ہے اور ریزلٹ جو ہے وہ مختلف آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ریاض فتیانہ صاحب کا اور اسد الرحمان رمدے صاحب کا حلقہ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو رائٹ پہ ریزلٹ ہے اس پہ 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں اور 33,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں. فائنل ٹیلی جب آتی ہے
تو 1,28,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں اور 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، اب یہ دونوں ریزلٹس میڈیا پہ چلے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب متضاد ریزلٹ چلاتے ہیں اور جو ابتدائی آپ کے پاس معلومات آ رہی ہیں بغیر فارم 45 کے، اس کی بنیاد پہ جب ریزلٹ چلتا ہے تو وہ غیر تصدیق شدہ ہوتا ہے، وہ غیر حتمی ہوتا ہے. یہ گجرات کا ایک حلقہ ہے عابد رضا صاحب کا، اس میں جو الیاس امیدوار جیتا ہے چوری الیاس، وہ اس میں ہے ہی نہیں. ان کے 90,000 ووٹ ہیں اور موسیٰ الہی صاحب کے 85,000 ووٹ ہیں. جو امیدوار جیتا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے. میں اپنا رزلٹ آپ کو بتاؤں، میرا رزلٹ جب آنا شروع ہوا تو تمام چینل پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی برتری دکھائی گئی. میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے، مگر بات یہ ہے کہ آپ فارم 45 دیکھیں. میں آپ کو 2-3 فارم 45 دکھاتا ہوں جہاں پہ ان کے ڈبل ڈیجٹس ہیں. عطا تارڑ 281، بلاول صاحب 81، اور پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ کے بھی کوئی تقریباً 200 ووٹ ہیں. تو یہ فارم 45 جب آنا شروع ہوئے تبھی تصدیق شدہ جو ہے وہ رزلٹ ہم نے دینا شروع کیا، اور ہمارے فارم 45 میں اور پریزائڈنگ افسر کے فارم 45 میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ فرق نہیں ہے تو پھر ریٹرننگ افسر نے وہی فارم 45 ای سی پی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے اور وہی حتمی نتیجہ سامنے آیا. یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ فارم 45 کی بنیاد پہ نہیں بنا اور فارم 45 اور تھے اور فارم 47 اور ہے، یہ غلط تاثر ہے. کے پی کے اندر تو آپ کا فارم 45 اور فارم 47 آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے. پنجاب اور سندھ میں اور بلوچستان میں آپ اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں، وہ بھی وہاں جہاں پہ ہار رہے ہیں وہاں پہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ تو جشن ہے، وہاں پہ الیکشن کمیشن کی تعریف ہے، وہاں ویڈیو چڑھا رہے ہیں ہم جیت گئے، ہم نے بازی مار لی، ہم سبقت لے گئے، ہم نے فلاں کر دیا. اور اسی ضلع میں اگر 7 والی سیٹ ہارے ہیں تو آپ ہی کی پارٹی کا امیدوار جو رو رہا ہے نون لیگ نے دھاندلی کر دی. بھائی نون لیگ نے دھاندلی کرنی ہوتی تو 7 والے حلقے میں بھی کر لیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے، بیرونی طاقتوں کے ذریعے، اور باہر بھی ان کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا ایک اور ملک میں جہاں سے یہ چیزیں اپلوڈ کی جا رہی تھیں. 90 ارب روپیہ تو صرف خیبر پختونخوا. اس میں پاکستان میں نیشنل الیکشنز منعقد ہوئے جو کہ بار بار ڈیلے کیے گئے تھے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں، رول آف لاء کی وائلیشن میں. وہاں 2024 اس وجہ سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ اس سال الیکشن کے دوران پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ وہ انٹیک کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے خلاف. ہمارے جو اندازے کے مطابق جو اس وقت تک ہم نے کمپائل کیا ہے اس کے مطابق 177 سیٹوں میں سے جو ہماری ہونی چاہیے تھی 92 صرف ہمیں دی گئی ہیں اور 85 سیٹس جو ہے وہ فراڈولنٹلی ہم سے لی گئی ہے، جن کے لیے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل سٹیپس جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. ان میں سے 46 سیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس ویریفائڈ ڈیٹا موجود ہے کہ وہ لی گئی ہمارے ساتھ، جو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا. اور 39 سیٹس وہ ہیں جن کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل ہو رہا ہے اور ان the next 24 hours وہ ڈیٹا بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوگا. یہ جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کیا ہے اس کے ہم نے 3 بینچ مارکس ہیں، ان کے اوپر ہم نے ان کو یوز کر کے ہم نے یہ ڈیٹا کیلکولیٹ کیا ہے. یہ جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کیا ہے اس کے ہم نے 3 بینچ مارکس ہیں، ان کے اوپر ہم نے ان کو یوز کر کے ہم نے یہ ڈیٹا کیلکولیٹ کیا ہے. ایک ہے جو کہ ڈسکرپنسی ہے بٹوین فارم 45 اینڈ 47. جو درجات فارم 45 میں ہے وہ فارم 47 میں نہیں ہے. یہ پہلا بینچ مارک ہے. دوسرا بینچ مارک جو ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں ووٹ جو پول ہوئے ہیں ان میں فرق جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ بعض دفعہ نیشنل اسمبلی میں پروونشل اسمبلی سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پول ہوئے ہیں. تو یہ دوسرا بینچ مارک ہمارے لیے تھا. اور تیسرا بینچ مارک جو ہم نے کنسیڈر کیا ہے وہ ہے نمبر آف ریجیکٹڈ ووٹس جو ہے وہ ان سرٹن کیسز جو ہے وہ مارجن آف وکٹری سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ جو جتنے نمبر آف ووٹس کے اوپر کوئی شخص ہارا ہے جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں اس کے وہ اس سے زیادہ ہیں.
ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और जो हमारी प्रोसीडिंग्स जो है उनका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समाबिया ताहिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब टेक ओवर करके मामलात को आगे बढ़ाएं। समाबिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले हमारे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे मीडिया पर्सनल्स, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आज पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम सबसे पहले एक वीडियो प्ले करेंगे जिस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के करता हूं क्योंकि इस्लामाबाद में भी नौटंकी शुरू हो चुकी है। वहां पे अब बकायदा रोना रोया जा रहा है और मैं अता इससे पहले कि आप सवाल लें, मैं एक आखिर में बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अभी भी किसी को भी एतराज़ है तो उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है। हम इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान नहीं हैं, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपको किसी किस्म का कोई एतराज़ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लेवल पे है तो उसका फोरम इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और अपने मुल्क के कवानीन है। अब वहाँ बैठकर आप इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं, एंड आई वांट टू बी वेरी क्लियर to the international media also, that Pakistan does not need and will not tolerate any intervention, because we do have all the election legal platforms available to all political parties in Pakistan to utilize and to submit whatever they have in their defense and what we have in our defense. And though there are 2 parties contesting, 3 parties, there are constituencies where more than 10 parties are contesting. Not everybody has to win, and not everybody can be happy with election commission, and because we are also a grieved party. We do have hundreds of petitions in election commission and in tribunals also. So one, that this party only believes in fascism, in anarchy, and that is what they've been displaying since 2013. जब पाकिस्तान एक ट्रेजेक्ट्री पे था, तरक्की की ट्रेजेक्ट्री पे था, और उस वक्त भी ये 14 में क्या कर रहे थे, चाइना का सदर आ रहा था, ये डी चौक पे कब्रें खोद रहे थे। मुल्क में सीपैक आ रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदी शलवारें और गंदे कपड़े लटका रहे थे। मुल्क के अंदर तरक्की हो रही थी, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी, मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही थी, महंगाई कम हो रही थी, बिजली के मंसूबे बन रहे थे। ये क्या कर रहे थे, वो आपको याद होगा उस वक्त मौलाना कौन से थे जो तारुल कादरी साहब, उनके साथ खड़े होकर रोज वहां कब्रें खोदते थे। आज एक कब्र में चला जाता था, दूसरे दिन दूसरा कब्र में चला जाता था। और उसके बाद ये 18 में आरटीएस को बिठा के इन्होंने मुल्क के साथ वो किया जो ये उस वक्त करना चाहते थे। मईशत को तबाह की, अनारकी फैलाई, महंगा तरीन मुल्क किया, बेरोजगारी की, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए सियासी अदम इस्तेहकाम लाए। फिर जब 18 में अपना वो आरटीएस बैठ के ये सब कुछ किया, 22 के अंदर जब इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया तो फिर 9 मई हो गई। और 9 मई ये माइंड सेट ही इंतशार का है। अगर किसी चीज में ये काबिले तारीफ हैं, किसी चीज में इनको हार पहनाने चाहिए, इनको शाबाश देनी चाहिए, वो मुल्क में इंतशार, फितना, फसाद, नफरत और ये इस तरह की हरकतें, अदम इस्तेहकाम, और बहुत शाबाश देनी चाहिए तो वो माशी तबाही जो इस मुल्क की है और जारी है। आप मुल्क में इलेक्शन हो गया, मुल्क के किस पार्टी हेड ने कभी पाकिस्तान को कहा कि मुल्क में, हमारे मुल्क में जाली इलेक्शन में इंटरवीन करें, या किसी और मुल्क को कहा हो कि आप इंटरवीन करें? इसका मतलब है कि आप मुल्क के अंदर किसी कानून को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर किसी ज़ाब्ते को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर मुल्क की सॉवरेनिटी, मुल्क की इंडिपेंडेंस को मानते ही नहीं हैं। आप गुलाम हैं क्योंकि आपको फॉरेन फंडिंग आती है, आपका पैसा बाहर से बंद हो जाए तो आपकी ज़बानें भी बंद हो जाती हैं। और आपने ये पूरा सोची समझी साजिश की इसलिए कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी ना आए और सियासी इस्तेहकाम भी ना आए। इसलिए मैं बार बार इंटरनेशनल मीडिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि दीज आर फ्रॉड्स, दे आर लूटर्स, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर लूजर्स, और दे हैव नो एविडेंस
to stand by law or in the court of any law. They have nothing in their own favor except for these screenshots of the TV screens. And it is unfortunate. मतलब मैं आपको ये मैंने मीडिया को represent किया. it is unfortunate that they have used media. क्योंकि अगर ये मीडिया को फॉर्म 45 दे रहे थे तो ये फॉर्म 45 ले जाए ना इलेक्शन कमीशन में, जमा करा दें. वो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो उसको असली फॉर्म 45 के साथ कंपेयर करेगा. अगर वो जाली फॉर्म 45 है तो वो यही कहेगा कि ये जाली फॉर्म 45 है. और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो उसकी और फोरम्स मौजूद हैं. आप उसका फोरेंसिक करा लें दोनों का, आप उसकी डिटेल ले लें, आप उसको मजीद एविडेंस में ले जाएं. लेकिन आओ अमेरिका मेरी मदद करो. वो अमेरिका जो साजिश करके तुम्हें जिसने बाहर निकाला, एब्सोल्युटली नॉट कहते थे हम गुलाम नहीं हैं, हम पता नहीं तुम, मतलब ये लोग मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं. ये लोग मुल्क, और मैं तमाम पार्टीज के इसको भी ये कहना चाहती हूँ कि ये एक दहशत गर्दों का ग्रोह है, सियासी दहशत गर्दों का. ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है. इसका जो साथ देगा, मतलब रात को खड़े होते हैं तो कहते हैं किसी और कैफियत में होते हैं तो कहते हैं 180 सीटें जीत गए. सुबह वो 150 हो जाती हैं, शाम तक वो 120 हो जाती हैं, जो 92, 93 के ऊपर. हमने 2018 में पंजाब में 132 सीट्स जीती थी. हम ऑपोजिशन में बैठे थे. इन्होंने हमें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी थी, इन्होंने एलाइज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी. हमने अक्सरियत ली, 132 सीट्स ली थी. हमने कहा था मुल्क, आरटीएस जब बैठा था, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, हमने यादगारों के मुजस्मे उखाड़ के बेहुरमतियां शुरू कर दी थी, आगे लगानी शुरू कर दी थी, गले पकड़ लिए थे जजेस के. हम पार्लियामेंट में बैठे थे, हमने अपने तमाम एतराज इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे, एहतजाज किया था, जो कि सियासी एहतजाज का तरीका होता है. हमने कौन सी कोई पटारी खोल के अमेरिका को कहा था आओ मैं हमारी मदद करो? मगर ये अमेरिकन एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स हैं गैर मुल्की, जहां से फॉरेन फंडिंग आती रही. उनको क्या जवाब देंगे अगर परफॉर्मेंस ना दिखाई तो? असल में तो ये पूरा नेक्सस है जो अनफोल्ड होता है हर इवेंट पे. जी जैसा आप बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन था ज़ाहिर एक स्टेट एक्टिविटी है, जैसा आप बयान कर रहे हैं. इसका मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट थी इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए, जिसके लिए स्टेट लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, पोलिटिकल पार्टीज हैं. तो इससे ये ह्यूज ऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम जिसका आप बयान कर रहे हैं, तो इसको अदारे और इलेक्शन कमीशन उसको कैसे रिस्पॉन्ड? देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड इस सूरत में है कि जब जुर्म करते हैं ना, वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, उसका पूरा ऑर्गेनाइज होकर झूठा बयानिया बनाते हैं. वो बार की कुव्वतों को जोड़ते हैं, बाहर बैठे अकाउंट्स को जोड़ते हैं, पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उम्मीद की जाती है कि हम भी ऐसा ही करेंगे. मतलब हम पे एतराज ये आता है कि पीएमएलएन क्यों नहीं ऐसा कर रही, या और जमातें ऐसा क्यों नहीं कर रही. अफसोस तो है कि वी हैव एज ए नेशन वी हैव रिड्यूस्ड टू दिस, कि झूठ बोल रहे हो तो उससे बड़ा झूठ बोलो. कोई अगर गलत बयानी कर रहा है उससे बड़ी गलत बयानी करके सामने आओ. मतलब कि एक हमारा मिजाज बन गया है कि आप बात यह है कि इलेक्शन रिजल्ट आ गए, ये एक्सपोज हो गए हैं, इनके पास इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए कुछ भी नहीं है. अगर इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होता तो आज इस्लामाबाद मैरियट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहे होते. इलेक्शन कमीशन के सामने बैठकर अपना एविडेंस दे रहे होते, अपने केसेस लड़ रहे होते और अपने सबूत देकर केसेस के अंदर फैसले करा रहे होते. जब अपने पास कुछ नहीं है तो वहां जाके मैरियट में इंटरनेशनल मीडिया के सामने प्रेस टॉक कर रहे हैं. आपने कहा कि इन्होंने बयान दिया था कि ढाका बना देंगे केसी में, क्या मुल्तान नेशनल असेंबली 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Mabia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you
copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Anana. Thank you, जी. So, पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है. उस पे झगड़ा वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया है. जो फॉर्म 45 के तहत बनाया गया है वो बिल्कुल ठीक है, और जो इन्होंने डिजिटल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाली रिजल्ट चलाया स्क्रीनशॉट्स की बेस के ऊपर, उसको चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है. और मेरा इल्जाम तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे है भी नहीं. मेरा इल्जाम तो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर है कि उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया. तो मैं ये समझता हूँ कि ये जाना चाहते हैं बड़े शौक से जाएं, मगर क्योंकि मैं नतीजे से मुतमईन हूँ और मेरे फॉर्म 45 मेरे पास हैं, तस्दीक शुदा हैं, मोहर शुदा हैं, दस्तखत शुदा हैं, और उसमें मुझे कोई अभाम नहीं है. मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैंने सब्र तहम्मुल के साथ फॉर्म 45 का इंतजार करके तो उसके बाद जो है वो अपनी फतह का जश्न मनाया अल्लाह के फजल से. और मैं इंतजार किया कि ये फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर भी लेके जाए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक, ताकि जब कंसोलिडेशन हो तो तमाम 45 प्रिजाइडिंग अफसर के मुहैया शुदा फॉर्म 45 वहां पे मौजूद हों. तो इन्होंने जो जाली चलाए हैं जरूर चलाएं, अभी भी चला दें, सोशल मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मगर आपका झूठ पकड़ा गया है, आप एक्सपोज हो चुके हैं, और आपने जो एक धांधली का तासर देने की कोशिश की थी वो गलत साबित हो. और अभी भी उल्फत भाई एक मिनट, अभी भी अपनी स्क्रीन पे अगर आप नाजरीन देख रहे हैं तो ये फॉर्म 45 नहीं दिखा रहे, वो स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं टीवी चैनल्स की. इलेक्शन कमीशन मतलब इन्होंने मीडिया को इस झूठा फीड करके फिर अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एविडेंस. रेहाना डार ने, मरियम साहिबा, रेहाना डार ने इलेक्शन कमीशन के सामने उनके वकील ने कहा कि हम जीत चुके थे. उन्होंने कहा जी किस चीज के मुताबिक? उन्होंने कहा जी मीडिया के मुताबिक. तो उन्होंने कहा कि फिर आप रिजल्ट भी जाके मीडिया से ले लें या केस भी वहीं पे कर. उल्फत भाई की बात सुने. मैंने ये फरमाएगा कि आप मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया दिया था कि हमने रियासत को बचाया, अदरवाइज मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था. कल एक फॉर्म मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जारी किया है कि ये अदम एतमाद की तहरीक हम नहीं लेके आए थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने लेके आए और हमने इस पर मोहर लगाई और इमरान खान की हुकूमत. उल्फत भाई इससे पहले कि मैं आपका ये जवाब दूं, मलिक अहमद इस पे काफी तफसील से बात कर चुका, लेकिन मैं भी दूंगी बिकॉज आप चाहते हैं कि मैं दूं. लेकिन एक बात मैं जरूर, देयर आर फ्यू फ्रेंड्स सिटिंग हियर फ्रॉम फॉरेन मीडिया and there is a press conference going on for international media in Islamabad. I would also request the international media to please get Form 45, which the Pakistan Tehreek-e-Insaf people representing in Islamabad at the moment are saying that these are forged and these are real Form 45. And the Form 45, those are compiled at Form 47, they, according to them, are fake. So first of all, do not depend on the media screens, because when they were asked to present all the Form 45 which they think are the correct ones, they were unable to provide those Form 45 in the Election Commission. So the Form 45 which they have are, one, forged. They are fake Form 45, and that is the reason that they are not submitting those Form 45 to the Election Commission. They're only submitting the screenshots of the TV channels where the results were shown according to the Form 45 fed by Pakistan Tehreek-e-Insaf on social media. So I categorically deny the fact that the Form 45 that are uploaded on the Election Commission websites are fake, because there's no other Form 45. And where there are Form 45s which PTI hold at the moment, they are fake and they are forged, and that is the reason they're not submitting those forged and fake Form 45 in the Election Commission when the petitions are being heard. So this is all drama. This is a fake drama. This is a pattern and a trend which PTI is used to, and now allegedly are saying that, you know, the Pakistan Muslim League Noon has rigged the election, or other political parties have rigged the election. I don't understand. There's one election commission that has conducted elections in Khyber Pakhtunkhwa
where they've been appreciated by Pakistan Tehreek-e-Insaf that they were very fair, they were very transparent. The same election commission has conducted the elections in Punjab, and where they have won, they are appreciating the transparency and fairness of the elections. And where they have lost, they are allegedly saying that there has been rigging. So this can't be true, because there's one election commission, the elections have to be transparent, or the elections have to be not transparent and not fair. So the argument, they're contradicting themselves. If the election Form 45, where they have won the majority seats, are real Form 45, then where they have lost are also real Form 45, uploaded on the websites of the Election Commission. मौलाना फजल रहमान साहब हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। पीडीएम में मैंने जितना क्लोजली मौलाना साहब के साथ काम किया है, जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, जिन मौलाना साहब की आइडियोलॉजी को मैं जानती हूँ, उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उससे अगर मैं वाकिफ़ हूँ तो ये इत्तेहाद मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मौलाना साहब का जो एतराज़ है, ज़ाहिर है वो भी उनकी जमात इस वक्त इलेक्शन कमीशन में गई हुई है और अपने एतराज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह जमा करा रहे हैं, और जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला देगा वो हम सबको कबूल होगा। लेकिन जो आपने इत्तेहाद वाली बात की, मैं नहीं समझती। जी, वो उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये सारी बात हुई। मैं उस मीटिंग में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त बहुत करीब से चीज़ों को देख रही थी बतौर तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मैं पार्लियामेंट में दी थी, पूरा वोटिंग प्रोसेस देखा, सबमिशन ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखा। उसके अंदर मैं किसी ऐसे इंसिडेंट्स की प्रिवी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हुआ हो या ऐसी कोई मीटिंग हुई हो। एक लीगल तरीके से, आईनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब इनकी अपनी जमात के लोग इनको छोड़कर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे थे और इनको वोट आउट कर रहे थे, क्योंकि 4-4.5 साल की जो नाअहली नलायकी मुल्क के अंदर छोड़कर गए थे, और इन लोगों का हलकों में जाना, इनके अपने कैंडिडेट्स का हलकों में जाना मुश्किल हो गया था। जब इन्होंने साइफर लहराया और एक झूठा बयानिया बनाया, तो ये एक आईनी तरीक़ाकार के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल प्ले किया, और उसके बाद जो इनकी अपनी जमात के मेंबर्स थे उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेकर इनको वोट आउट किया। देखिए, टीएलपी और जमात इस्लामी के, मैं अपने हल्के का आपको बता देता हूँ, उनके तो पोलिंग एजेंट नहीं थे हर पोलिंग स्टेशन में मेरे भाई। मतलब 337 पोलिंग स्टेशन में से मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल 60-70 पे उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे। तो वो पता नहीं कौन से फॉर्म 45 की बात करें। फॉर्म 45 337 जमा करने थे हल्के में। मेरे पास तो डबल पोलिंग एजेंट थे। हमने एमपीए का अलग पोलिंग एजेंट खड़ा किया था, अपना पोलिंग एजेंट अलग किया था। मेरे पास इस हल्के के अंदर ये 337 पोलिंग स्टेशन है, मेरे पास 650 की फोर्स मौजूद थी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर थी। अगर तो इन्होंने ये फोर्स खड़ी की थी और इन्होंने तस्दीक शुदा ये वसूल किए थे तो ये बात जरूर करें, मगर 60 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, भैया आपने जमा भी किए पूरे के नहीं। और मैं आपको बता देता हूं, एक बात मैं फॉर्म 45 आता आपको ले करते हैं। सिरल अलमाइडा साहब, ये भी एक रवायत चल पड़ी है कि आप, क्योंकि आपके पास वो इन्फ्लुएंस है और क्योंकि आपके पास वो ट्विटर हैंडल है, तो आप किसी का भी बात निकाल कर आप उसको वो करें। मैंने भी ट्वीट पढ़ा, कह रहे हैं जी मरियम औरंगजेब हैज कॉल्ड इमरान खान एन अमेरिकन एजेंट। आई हैव कैटेगोरिकली सेड कि यस, इफ समबडी विल ट्राई and seek help and intervention from a foreign country to intervene into their countries, who will you call? What are they? What will you call them? मैंने आपको ये कहा है कि इनकी जमात के अंदर फॉरेन फंडिंग के थ्रू फॉरेन एजेंट्स मौजूद हैं जो मुल्क के अंदर इस तरह की अनारकी फैलाते हैं, और उनका जो सरबराह है वो इमरान खान है। I stand by my statement, because why do you have to call America to intervene into democratic process of the country? You, Cyril Almeida से मेरी दरखास्त है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, he should condemn that act। मैं ये एक फॉर्म 45 का एक एग्जांपल आपको दे दूं। ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोट लखपत लाहौर का फॉर्म 45 है। बिलावल साहब 81 वोट, जमात इस्लामी के एहसानुल्लाह वकास साहब 15 वोट, अता तारड़ 281 वोट, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ज़ीरबाज खोखर 273 वोट और टीएलपी 82 वोट। देखिए ये ट्रेंड होता है,
ये ट्रेंड हर जगह आपको नजर आता है कि किस तरीके से कुछ बातों के कम वोट है, कुछ के ज्यादा हैं। अब आपने पोलिंग एजेंट खड़े नहीं किए, फॉर्म 45 कलेक्ट नहीं किए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एंड आई वुड ऑल्सो, देखिए ये एक इंटरनेशनल इशू भी इस वक्त बना हुआ है। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। वेयर इट हैज सूटेड द पीटीआई, they have alleged rigging. Where it has not suited them, they've won easily, they have declared it to be a free and fair election. Either it was a free and fair election in all places, or it was a rigged election in all places. It can't be that you have picked and chosen constituencies where you have done rigging. I think it's a false allegation, and the PTI is trying to manipulate these election results, and first they claimed victory, then they claimed their own loss. So I think it's just false narrative which is being aired on media and social media, and PTI should refrain from derailing democracy because we want democratic consolidation. ये बताइएगा कि हारने वाले जब कोई इल्जाम लगाते हैं वो तो समझ आती है, लेकिन आपने कहीं वो रहमान जीते थे, वो जीतने के बावजूद धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में नवाबदारा की बात आई, वो कहते हैं मैं हारा या जीता, लेकिन जो तीसरे नंबर पे था वो कम से कम नहीं जीता, उसको जितवा दिया। देखिए, मैं किसी की यहाँ तर्जुमान नहीं हूँ। मैंने एविडेंस पे बात की है और मैंने कंडेम किया है इस रवैये को कि आप पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आके इंटरवीन करे, आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आकर इंटरवीन करे। ये रवैया जो है, ये गुलामाना रवैया, जो कहते थे कि हम गुलाम नहीं हैं, ये उनका रवैया है। हमने अपना मुद्दा बयान कर दिया है और मेरा आखिरी मुद्दा मेरा ये है कि आपको आज भी कोई एतराज है तो उसका फोरम मैरियट नहीं है, उसका फोरम इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, उसका फोरम अमेरिका नहीं है, उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, उसका फोरम पाकिस्तान के अंदर राइज अदालतें हैं, ना कि आप दूसरे ममालिक को कहें कि आओ हमारी जमहूरियत के अंदर इंटरवीन करो। मीडिया को यूज किया गया जी, बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात आपकी आमद का। नीचे रख बैठ जाए ना, छोड़िए, बैठ जाए बाद में कल करूँगा मैं, बैठ जाए। जी, बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू उर्दू और अंग्रेजी दोनों में करूँगा क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया के दोस्त भी मौजूद हैं। सो आई विल स्पीक इन बोथ उर्दू एंड इंग्लिश। सर आजे, सर आजे, सो दैट एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर, सर कुर्सी है, आजे आजे, आप साथ follow what happened. So the first thing to remember while we look at the data, the evidence that we have, is that the rigging that happened with respect to this election primarily happened at the offices of the returning officers. Now that is a very serious thing. Normally one talks of rigging at polling stations where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state, where the accusation is that the rival candidates carried out the rigging. But once the votes have all been brought to the office of the returning officer, who is a state official, and once the forms, the Form 45, that tabulates the result at every polling station has been brought to the office of the returning officer, one expects that the final aggregate based on the results from each of the polling stations would be done fairly by the returning officer. Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. Fictitious Forms 47 were created, which had nothing to do with the underlying vote that had been cast on the 8th of February. The underlying Forms 45 that were delivered at the offices of the returning officers were tampered with, were discarded, and completely fictitious results were created in at least 90 National Assembly constituencies. Now this raises a very serious and troubling question for democracy going forward. What is the point in holding an election if you're going to create a result out of thin air? Why should people come and vote at all on polling day if the result is going to have nothing to do with how they voted?
So now what we are facing is a permanent question mark over democracy going forward. If the state officials responsible for safeguarding the election can be won over, then do what they did during the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leaders. During the night of the 8th and the 9th and the morning of the 9th of February, then every election to be carried out in Pakistan, to be conducted in Pakistan, becomes a farce. That is why we are standing up and we are saying this farce must be reversed. If it is not, that will spell the death of democracy in Pakistan. This was not just an election fraud. This was a wholesale assault on democracy in Pakistan. And we know this followed months of suppression of the PTI workers, PTI leadership that were picked up in the thousands, leadership as well as the grassroots workers. Our symbol was taken away in the hope that people could not know who to vote for. This atmosphere of fear that pervaded the election campaign, every day our workers were picked up, our banners, posters, steamers were taken down by official vehicles, municipal corporation vehicles across the country. And anybody who invited us to a corner meeting had his home broken into during the dark of the night. So with this atmosphere we went into the 8th of February, nevertheless determined to allow the people of Pakistan to speak. And the people of Pakistan roared on the 8th of February. They roared back against the oppression that had been unleashed on them. This was a historic vote. We need to congratulate the people of Pakistan. I went to polling stations in dark, dingy lanes, and I went to women's polling stations that day where illiterate women were standing, queuing in lines for hours, and they had actually painted our election symbols on their sleeves, on their hands. We all had different symbols. I had a badminton racket, people underneath me, somebody had an aeroplane, somebody had a paintbrush, and they knew who to vote for. These were illiterate women and men. They had taken our symbols to their hearts. We really thought that we would have a tough time getting people to vote for our diverse symbols. But the people assured us, they said, we know who you are. We know who you're standing for. We know what you're standing for. They cannot fool us by taking your symbol away. This was a magnificent effort by the people of Pakistan. However, what happened was equally disgusting. We have magnificence on one side and disgusting assault on the election on the other. So during the night, in my case for instance, in A128 Lahore, throughout the day the polling stations were swarming. It was a carnival atmosphere. And the Forms 45, as they started trickling into the RO's office, I was sitting there, I had gone there around 6:30 p.m. to be present. Every single polling station that had come in by 10 p.m., I had won. And the next morning when we got the Forms 45, I had a lead of 100,000 over the other candidate. 100,000. But at 10:30 p.m. I was ousted from the RO's office. There is a video that is when I could play that. So a contingent of policemen actually physically threw me and my wife, who was my election agent, out of the RO's office. My wife stood her ground, she sat on a chair, they physically lifted the chair and they threw us out. And thereafter they created the fake Form 47 that they announced at 1 p.m. the next day, the 9th of February. Which had nothing to do. Now what they did was ridiculous. They could not really take away my vote, so they declared that I had polled 160,000 votes in Lahore in my constituency. This was a massive vote. This was a vote greater than any other in Lahore. But then
They showed my opponent, who had not actually gone beyond 60,000, as having polled 172,000 votes. This took the turnout for my constituency, NA 128, to 57%, whereas the turnout for every single provincial assembly seat underneath me, under NA 128, is 39 or 39.5%. So a jump of 19% between the National Assembly turnout and the Provincial Assembly turnout tells you everything. And I would urge the international media, the observers, to look for the turnout figures for the Provincial Assembly and for the National Assembly in the various constituencies where we say assault took place. And you will see this pattern repeated everywhere. This suggests that 110,000 voters entered polling booths and did not vote for the provincial candidate, but only voted for the national candidate and only the candidate opposing me. This is absolutely ridiculous. And this shows the clumsiness with which this assault was carried out. And we are taking all this to the courts, we have taken all this to the Election Commission, and we have our forms with us. Here I have the Form 45 that we filed in the Election Commission of Pakistan on the 12th of February. Now, I could not have, nobody could have recreated these forms in 3 days. We filed every single form, we've done a detailed analysis, compared the results of the provincial assembly seats, and I urge all candidates to do that, do the hard work, and it is indisputable that there was an assault of the most drastic nature on the election process on the 8th and the 9th of February. Now with this, I want the international media, the international observers to take our message to the world, to say that the people of Pakistan have been denied their voice yet again. And the consequence of this is most serious for the country. Kindly see, had we been allowed our fair number of seats, the PTI clearly would have emerged as the only federal party in Pakistan. We would have had at least 14 seats in Karachi. We would have had seats in Balochistan. We would have had seats everywhere. And we would therefore be the federal party that we actually are. But what they've done by the rigging that was carried out, they've turned every party into a small regional party. So what we have now is the People's Party as just a Sindh party. We have the PMLN, which got no more than 20 seats. With fake seats given to them, their figure has gone beyond 70. But it is clear that by fracturing the mandate of the PTI, we have done damage to the federal project in Pakistan. उर्दू में थोड़ा सा कहूँगा, देखिए हर हल्के में आपने ये देखना है कि जो सूबाई असेंबली के वोट हैं उस हल्के में, उनमें और कौमी असेंबली के वोटों में फर्क कितना है। मेरे हल्के में NA 128 में 1,10,000 वोटों का फर्क है। ये वो वोट है जो मेरे मध्य मुकाबले को छूट डाले गए, और ये चीज हर हल्के में हुई है। जब आप नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के वोटों को उसी हल्के में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उस दिन हुआ क्या। इससे ज्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सारे फॉर्म 45 तो देख ही सकते हैं, ये ऑनलाइन मौजूद हैं। इन फॉर्मों को कोई शख्स 2 दिन में नहीं बना सकता था। हमने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म फाइल कर दिए ताकि ये इल्जाम न लगे कि किसी ने बाद में बनाए हैं। लेकिन इन फॉर्मों से ज्यादा जो फर्क है प्रोविंशियल और नेशनल का, वो आपको सब कुछ बता देता है। हमारा पैगाम लेकर जाइए जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की खातिर, और सारी दुनिया को बताइए कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। Thank you so much, सलमान भाई। Now next, यहाँ हम अपनी बहन अलीमा अता को खुशामदीद कहते हैं, और मैं कहता हूँ जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी इस बहन के लिए, जिसने आपने भाई की मदद के लिए जंग लड़ी है, और मैं बहन को साथ पेश करता हूँ। Alima Appa, thank you so much, and Isma Appa, thank you so much for coming here and joining us. We are grateful, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान साहब हैं, वो हमारे दरमियान होंगे, और इंशाअल्लाह एक बार फिर कहेंगे इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ, इमरान खान कदम बढ़ाओ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से। गुजारिश है, काइंडली इंतहाई शोर सुनाई दे रहा है, प्लीज मेंटेन साइलेंस।
ताकि हम एक दूसरे को सुन सकें। कोई दोस्त जो हाथ में बोलेगा पीछे से बोल रहे हैं काइंडली खामोश हो जाए, जरा स्पीकर्स को आप सुने। और ये मैं डाइस पे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्पीकर कॉल होगा, जलसे की शक्ल न दें, इसको प्रेजेंटेशन तक महदूद रखें। जो दोस्त बोलेगा उसे बाहर निकाल देंगे। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया तक जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अयाज अमीर साहब से कि प्लीज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुतालिक आप प्लीज आगाह कीजिए इंटरनेशनल मीडिया को भी और नेशनल मीडिया को भी। थैंक यू सर। एंड प्लीज ये तमाम लोग जो राइट साइड में काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, प्लीज काइंडली थोड़ा पीछे हो जाइए, मीडिया डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे। प्लीज, दिस इज फॉर योर ऑन गुड, काइंडली थोड़ा सा पीछे हो जाइए। थैंक यू जी अयाज साहब प्लीज। Now, what were the mechanics of rigging in my Chakwal constituency, NA 58. NA 58 is to the south of Islamabad. The one thing done early in the evening was RO के दफ्तर को सील कर दिया गया. The RO's office is in the district complex. It was sealed by police and by क्या कहूँ, निगरानों के निगरान वो मौजूद थे और उन्होंने वो सारा बंद कर दिया. I had gone to the RO's office at 6 o'clock. They kept cajoling me, persuading me to leave, and I was kicked out at around 7:30, 8 o'clock, which means that the RO and other people were there and they could do what they wanted. मैं नहीं था, none of my election agents, no one else. I have all the form, the original Form 45. मेरे हल्के में 456 polling stations. The Forms 45